Hey guys, hi, hello everyone. All right, so in excitement, I think I got a few minutes early over here. I think this is the file we're working on. All right, I think we'll start a sharp at 11. Just minute. All right, guys. So today, what we're going to do is we're going to go for constraints. I think once we're done with constraints, I think we can now then move on to how can we alter table. Right. So this is something that we'll move on to. All right. Okay. Before that, I'll just increase the display setting as well. Okay, let me scale it up to probably 150 is a better choice over here. Fair enough. Oops, had the spelling wrong over here. All right, guys. So let's begin. Thank you very much for joining this session. I hope I'll be able to contribute to the journey for SQL over here. I'll just see is the entire screen working properly. If I'm moving something over here, I'm able to, once I write a code, you're able to see the code that I'm writing over here. Let me see. I think it's better for me to share the entire screen. Just a minute, guys. Just a minute. Okay. Here we go. I think I'm going to present the entire screen. I think that is a better way of, sharing the content. All right, then. Fine. I guess you guys can now, I'm sure, see my screen. Please put confirmation in the chat box so that I'll keep on visiting the chat box in between for any kind of doubts which might come up. Right. And I think I'll open up another tab over here. I'll move on to the same thing. Right. And through that, we'll begin. I'll just mute it up. Yeah, I'll see the chats over here, the comments over here. I think it'll be better, right? And let me move on to the SQL now. So I'm working on multiple screens over here so that now we can begin writing our code over here. Right. So I think in the previous class, what we've already seen, I think we can start with that. What we've seen already in the previous session. Let me start with that particular, a bit of revision for a minute. And then we can probably then move on to what exactly is required, right? So I'll just open up a dashboard over here. Right. So I hope the dashboard is visible and I think it's there on the screen now. Whoa. Sorry. Right. So I think the previous class we have seen how to create databases. I think we've seen the basics of what is a data, right? What do you mean by DBMS, right? What do you mean by RDBMS, which is Relational Database Management System, right?
And we have seen that how RDBMS, RDBMS are the data sets where, what we do is we share data in the form of tables over here, isn't it? We share the data in the form of tables. What is a table? In data terms is nothing but something which has a header and something which has a footer. Simple as that. Now, if there is a user who wants to interact with RDBMSs, the language which is used over here, the programming language, I should say, is used is structure query language, and that is why it's called as SQL. This is what we have seen. The basics of this is what we have seen over here, right? Then we moved on to how can we install MySQL Workbench. Now, we have already seen that if you're not able to install MySQL Workbench, we have online compilers in which no installation is required, and we can still run our codes over here. Okay, so I'll move on to that as well. I'll just move on to that as well, right? Now, right, this is what we've seen, online compilers, and how can we basically run our code either ways. If there's a problem in sharing the or rather installing the MySQL Workbench, we can still go for online compilers. Then what we saw last time was we seen how to create databases. We took the example of MySQL Workbench and we started working over there. Okay, so we saw how to create databases, and then we saw how to create tables. In fact, on an overall basis, we have seen that all the SQL commands, all the commands fall under 5 basic categories over here. Okay, we have seen this in the last class. The categories are DDL, data definition language. Then we have seen, in fact, I'll just put it up like this, 3, 4, and yeah, 5 over here. Right, so DDL, then we have seen DML, data manipulation language. DDL, I think once we saw create database and tables, this is all about creation, updation, altering. All of them are data definition languages, which basically talks about the columns of the table. Whereas DML over here is nothing but data manipulation language, in which you can insert data, we can update data, we can delete data over there. Okay, then we have third type of command, which is DQL. DQL talks about data querying language, in which once the data is created, once the databases tables are created, we can query some of the data over there. That is, we can retrieve. This is basically retrieving data from the databases. Okay, retrieving data from the databases. And this is the most important part, because generally once we join as a data analyst in a company, it's very simple that all the databases are created. We'll be just updating or adding things over there, but the databases are created, most of the tables are created, the diagrams are created. What we need to do is to write queries to fetch the required data over there. Okay, now that's where DQL comes into picture. So most of our time will be spent on DQL. In the first couple of sessions, we'll be done with DDL and DML, and then most of the time we'll be studying on DQL. Then we have something called as TCL, transaction control language. All right, we go for commit and rollback over here, and then we have DCL, data control language over here. Right. So I think these are the 5 basic commands that we have. All right, these are the 5 basic commands, and we will be sticking to these commands. We saw a glimpse of what DDL does. So all these things that we have seen are nothing but DDL. We also saw some of the commands called as insert into. Insert into is nothing but a command used to insert the data. This is a DML. Again, this is a DML command. It's basically used to insert data into tables. We can insert data into tables using this. All right. Now, we also seen that we can use the insert all the data. When we say all data, as in we are looking at all columns, right? We can insert data into all columns, or we can insert data into selected columns, right? This is what we have seen. We can insert data into all columns, or we can insert data into selected columns. This is what we've seen. We also have understood that DDL is majorly a command for columns. I think when we talk about DDL, we are majorly talking about creating databases, but in tables, DDL is majorly nothing but all about columns.
DML, however, is about the rows. So we can say that in a table, I mean, just for the sake of understanding it slightly better, we can say that DDL is all about columns in the table, whereas a DML is all about rows in the table. And in the table, rows is the actual data. Column is nothing but the structure, but the row over here, row gives me actual data, isn't it? Think about it, right? So that's the entire point over here. This is what we have seen. Apart from that, we created a few databases. If I look at MySQL Workbench, this is what we have done. These are certain databases that we created a database called as Grip on Data. And once we created the database, we started using Grip on Data, right? And using use Grip on Data command, create table. This is how we created the table. Let me, I think it'll be better if I just, make the code slightly better for you. So this is how we used create table command over here. Now every line that you're seeing is nothing but a column, is nothing but a column. So right now, while creating a table, we have given only two things. One is the name of the column, and the data type I'm going to put it in the column. We have seen the data type to be char, varchar, integer, and varchar. Now, we haven't seen the data types over here, which we'll see very soon. Okay. Now, select start from courses is nothing but that particular command which I was talking about, DQL. This is used to basically look at courses over here. What is the kind of table that we have created? Okay. So if we just run these commands again, let me run grip on data. Okay. And I think, oops, I think I'll just need to run this code. I'll just run this particular part. Yes, we are using grip on data now. And if I just run this particular code, I'm pretty sure that this will give me an error because the table is already created. That's what it's saying. Table courses is already created. So if I want to have a look at table courses, this is what we had, right? This is what is going to give me, this is what is the data. So I just entered one data over here, which is course ID GOD 102, data science, Saurabh, 100 intake, and online delivery over here. Right. And I think these all codes are run, but I think I had deleted the table again. And I think that's what I'm going to do today as well, because I need to make a lot of changes while making the table over here. Okay. So let's start from courses. Let me insert few more data points over here. Let me insert the data points. Or probably what I'll do is, I think we have done it in the previous session as well. So you guys are, more than, uh, you're absolutely free to go to the previous session. I'll just add the link of the previous session in the description, and you can see what we've done in the previous classes. What we've done is we also have imported data. We also have imported data. There is another thing that we basically left out. I left out that this also was done in the previous session. How to import data, right? That's what we have seen as well. How to import data. That is, we can import data from CSV or JSON files. There are two files, JSON and CSV. I think most of us are majorly equipped with CSV, right? So I think most of us will be comfortable importing data from CSV. So these two data points that you can see, data tables, I think you can see, which is called as demographic and professional, are actually nothing but small CSVs which are there in my local system, and using them I have imported this. Okay, right. So this is what we have done, guys, in the previous session. Meanwhile, guys, I'll just say that if you have any doubts, feel free to put it up in the chat box and I'll take it up in between. Okay, so I'll just keep an eye on who has created any kind of or put in any kind of doubt over here. Meanwhile, let's get back to the job. Now, if I run this, I'm using grip on data again, and now I'll go for creation of the table using the constraint. So in the previous case, I'll just copy the code over here. I think I'll just, this is the code with which we have created the table. Okay. This is the code with which we have created the table, isn't it? Now, while creating the table, we have given two things inside this parenthesis, the yellow ones. Can you just see the yellow ones over here? Oops. Okay. No worries. Now, can you see the yellow ones highlighted over here? Right, you can see the yellow ones over there. These yellow ones are the parentheses inside which I'm going to give detail about the column, because once I tell SQL that create a table, SQL will very logically ask that, all right, how many columns are there and what is the name of the column? So I'll obviously say that create table, name of the table is courses, but once I give the name of the table, I had to give the name of the columns as well. So this is the name of the first column, course ID,
and char 6 is nothing but the kind of data which goes into that particular column, data type. दैट इज किस टाइप का डेटा टाइप मैं यहां पर एंटर करने वाला हूं. ऑलराइट गाइस, हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे. ओके, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा इंग्लिश में, सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग आउट ऑफ माय माउथ. नाउ इफ आई लुक एट इट, कोर्स आईडी और कैर, कैर का मतलब रहता है, कैर इज अ टाइप ऑफ डेटा, इट्स अ डेटा टाइप. ओके, कोर्स आईडी इज नथिंग बट द नेम ऑफ द कॉलम. उसी तरह से कोर्स नेम दूसरे कॉलम का नाम है, और वेर कैर इज द डेटा टाइप दैट आई एम गोइंग टू एंटर ओवर हियर. सो अभी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है दैट देयर आर फ्यू थिंग्स ओवर हियर व्हिच आर data types. Okay, so यहाँ पर मैं, I'll just do it online over here, on screen over here only. Right, char का मतलब क्या रहता है और var char का मतलब क्या रहता है. Let me do that. Okay, so I'll use the online annotation. Okay, and yeah, I think the online annotation is present now. Char is nothing but it stands for characters, and I think it stands for fixed characters. It stands for fixed characters, which means that I'm saying that मैं course ID नाम का एक कॉलम बना रहा हूं जिसमें मैं कैरेक्टर डालूंगा. दैट इज मैं बेसिकली क्या डालने वाला हूं यहां पर, नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज करूंगा. यहां पर मैं नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज, I'll go for non-numeric entries. These non-numeric entries might be a combination of text and numbers or can be text only. Okay, 6 का मतलब है this is the number of characters which will be there in that particular thing that I'm talking about. Okay, इसका मतलब ये है कि मैं 6 से ज्यादा कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेबल में देखूंगा तो कोर्स आईडी के लिए मैंने जीओडी 102 एंटर करा था. अगर मैं इसकी जगह पर जीओडी 1023 एंटर कर दूंगा तो इट्स गोइंग टू गिव मी एन एरर सेइंग दैट यहां पर जो डेटा टाइप आप एंटर कर रहे हो, इट्स कैर एंड द only 6 characters are allowed over here. Okay, this is char. Now अगर मैं 6 से ज्यादा कैरेक्टर डालता हूं तो एरर दे देगा, ये तो क्लियर है आप लोगों को. बट अगर 6 से कम कैरेक्टर डालता हूं, जैसे अगर मैंने GOD 10 डाला, then in that case SQL क्या करेगा, SQL still will put in the 6 characters, 5 तो जो मैंने डाले और एक स्पेस, अंडरस्कोर नहीं डाल रहा है, दिस इज स्पेस, वो एक स्पेस से वो कैरेक्टर भर देगा. Which means that if the number of characters are anyways less than 6, it's going to still store the data with 6 characters over here by giving the rest of the space over here, rest of the characters left as space. This is characters. Once we move on to varchar. Varchar is nothing but, as the name suggests, it's also characters. But apologies guys for my handwriting. Right, I'm working on it. Right, so characters, and but this will be variable characters. वेरिएबल कैरेक्टर्स मतलब कैर में क्या था, 6 कैरेक्टर्स ही देने हैं आपको, और 6 से कम दिए आपने, 6 से ज्यादा दिए तो एंट्री लूंगा नहीं मैं, और 6 से कम दिए तो जो बचे हुए कैरेक्टर्स को मैं स्पेस से भर दूंगा. ईदर वेज मैं 6 कैरेक्टर तो डालूंगा ही डालूंगा. यहां पर भी varchar में आई मीन ऑलमोस्ट द सेम थिंग. varchar says that you have a what do you say, you have the right of entering characters variable from 0 to 30, sorry 1 to 30. 1 से लेकर 30 तक कितने भी कैरेक्टर डाल सकते हो, और 30 के ऊपर नहीं डाल सकते, बट 1 से लेकर 30 तक कितने भी कैरेक्टर आप डाल सकते हैं. वहां पर अगर आप मतलब, अब जैसे यहां पर मैंने अगर यहां जैसे कोर्स नेम है, कोर्स नेम इज वेरी हाई. फॉर एग्जांपल इफ आई गो फॉर डेटा साइंस and I go for data visualization. Now, can I say the characters are different over here? So here it will be stored as 1, 2, 3, 4, space 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This will be a 12 character case, and this will be, I'll have to count it, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18 characters over here. So varchar allows you to store data in two different length of characters, 12 and 18. So it is possible to store data for variable character length over here. Either ways it'll still be non-numeric. Varchar will still be numeric, that is या फिर ये टेक्स्ट रहेगा या फिर ये टेक्स्ट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है. राइट, इंटीजर, इंट एज द नेम सजेस्ट इज नथिंग बट इंटीजर. यहां पर मैं इंटीग्रल वैल्यू देने वाला हूं, सिंपल एज दैट. आई थिंक ये तीनों ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, कैर, varchar, इंटीजर.
Yes, there are other data types as well, but as we meet them, I'll explain them as well. But इंटीग्रल का मतलब रहता है इंटीजर आना चाहिए भी। यहाँ पर 22.2 भी नहीं डाल पाऊंगा, यहाँ पर मैं 22 डालूंगा या 23 डालूंगा। सिंपल एज दैट, इट हैज टू बी इंटीजर, इट हैज टू बी इंटीग्रल। सो वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है, टेबल के नाम दिया, द कॉलम का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ डेटा टाइप्स ओवर हियर। बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, this is what we've seen in the previous class, and now we have seen what is the meaning of data types over here. Okay, so let me minimize this, and मैं इसको हटा ही देता हूँ, otherwise आप इसको SQL का पार्ट समझोगे when it is not. Okay, so इसको हटा दिया मैंने. Now I am actually deleting this table because I would like to create this table by introducing something called as constraints over here. Constraints का मतलब क्या रहता है? Constraints का मतलब रहता है restrictions on certain columns or conditional restrictions on certain columns. That's the meaning of constraints. So यहां पर मैं क्या करूंगा, तीन चीजें दे सकता हूं जब भी मैं कोई टेबल क्रिएट करता हूं. टेबल कॉलम का नाम, कॉलम में कौन सा डेटा टाइप आएगा, और तीसरी एक और चीज दे सकते हैं which is called as constraints. They're called as constraints. और last time, yesterday, I think we took the session on Friday or probably on Thursday. जब हम ये थर्सडे को सेशन कर रहे थे तो हमने कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए थे. आज हम कंस्ट्रेंट्स देंगे इस पे. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस. मीनवाइल लेट मी चेक, इज देयर एनी डाउट, एनीथिंग? राइट, नथिंग. Cool. So I'll just come back to my this thing. Okay. Now, all right. Great. Now what I'll do is, एक काम करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ so that मैं फिर से एक बार टेबल बनाना चाहूंगा. Okay, I'll drop table and I'll drop now. That's it. It's okay. I'm just going to create that table again. So I'm going to create that table courses, course ID, बाकी सब वैसे ही रख रहा हूं. बस यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं क्या करूंगा, constraints का नाम दूंगा. For example, let me make this primary key. Okay, I'll go for this is primary key. I'll tell you what do you mean by primary key. इन सारे constraints का एक एक करके हम मतलब देखेंगे, और या फिर on second thoughts primary key मैं थोड़ा hold करके चलता हूं. I'll come back to primary key after some time. Let me start with some basic kind of constraints. As you can see, screen पे आपको दिख रहा होगा basic type की constraints जो आपके हैं. Those constraints are, well, I think I still can magnify the size of the screen. Can we guys? I'll just do that. एक मिनट, हाँ. I'll go for the same thing. Let me increase the size of the screen so that you guys can watch it properly. All right, I hope this should solve our case. Let me see. Yeah, I hope it is better. उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा space भी create कर देता हूँ so that we have bigger space over here. I think so. Yeah, codes are slightly better visible. Great. Now I can see that. Now मैं यहाँ पर क्या करूँगा, constraints दूंगा. I'll go and give constraints over here. Now पहला constraint जो मैं देख रहा हूँ, पहला restriction है, that is called as not null. I'll go for the same stuff. हाँ, मैं यहीं पर annotate कर देता हूँ screen के ऊपर so that all of us can understand what we are talking about. The first one I'm going to take is not null. Not null का मतलब है मैं यहां पर नल वैल्यूज नहीं ले सकता, और नॉट नल से भी ज्यादा बेटर मुझे लग रहा है, आई थिंक वी कैन स्टार्ट विथ यूनिक ओवर हियर. सो लेट मी स्टार्ट विथ यूनिक. यूनिक का मतलब है all the entries in that particular column will be unique. That is no duplicates. No duplicates. Okay. अगर मैंने यहां पर यूनिक मैंने यहां पर कंस्ट्रेंट दे दिया इस कॉलम पे, तो इस कॉलम पे मैं कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाऊंगा. I'll not be able to go for any kind of duplicated value over here, right? So let me go for this. Let me hide the annotation. Does it? Yes, it does, right? Okay. Now let me go for this thing. Now अब यहां पर टेबल क्रिएट करते वक्त टेबल का नाम मैंने कॉलम का नाम दिया, कॉलम का कैरेक्टर दिया. नाउ अब मैं यहां पर सीधा क्या कर देता हूं, यूनिक लिख देता हूं, और वो वहां SQL वर्कबेंच मेरे को सजेस्ट भी कर रहा है कि प्रॉब्ली शायद आप यूनिक लिखना चाहते हैं. यूनिक लिखा है बस, और कुछ नहीं करा है. दैट्स इट. यूनिक लिख दिया. इसका मतलब ये है कि अब अगर मैंने इस कोड को रन करा, यहां पर मैंने अगर इस कोड को रन करा, ओके, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इनफैक्ट आई थिंक एक ही साथ सारे के सारे मैं कंस्ट्रेंट दे दूंगा, पर ठीक है, नो वरीज. आई जस्ट क्रिएट दिस टेबल. मैं इस कोड को अगर रन करता हूं तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा, एंड द टेबल कोर्सेज गॉट क्रिएटेड ओवर हियर. ओके, मैं यहां रिफ्रेश करूंगा अगर, तो मुझे टेबल मेरे डेटाबेस में दिख जाएगा. And once I run this query, select star from
कोर्सेस। एक बार मैं ये रन करता हूं, वंस आई रन दिस वी कैन सी दैट द टेबल इज देयर। अभी कोई डेटा नहीं है टेबल में, right? Because I just have created the table. I haven't inserted any values yet. So I'll just close this quickly. This is the case. So let's start from courses. This is what we have over here. Now we can input data. And I think last class में जब हमने देखा था, let me insert data over here. Let me take a good example, right? I'll take this one. Why? Because ये वो example है जब मैं सारे column में data entry कर रहा हूँ. Okay. Now I'll insert this data. Insert into courses GOD 101 data analytics Saurabh 100 online, right? I'll just रन दिस कोड। तो ये क्या हो जाएगा, डेटा मेरे कोर्स के अंदर, मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। अब मैं फिर से अगर टेबल को कॉल करूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस, then I'll be able to see that this data is my first row और ये डेटा मेरे इसके अंदर आ गया है। अब if I remind you, may I remind you that what we have done is we have given unique constraint to the first column. इसका मतलब ये है that if I insert values with some or the other kind of things, for example I'll go for control C and यहां पर मैंने क्या करा, मैंने यहां पर एक जबरदस्ती में क्या कर रहा हूं, एक डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा हूं विच इज GOD 01। बाकी चीजें मैं भली बदल देता हूं। लेट मी गो फॉर आई गो फॉर डेटा साइंस, SCIENC, डेटा साइंस। ओके, और डेटा साइंस में यहां पर मैं डाल देता हूं सूरज एंड नंबर ऑफ पीपल 100 एंड इसको मैं क्या करता हूं, हाइब्रिड मोड में डालता हूं। ओके, हाइब्रिड मोड में मैं ये कोई कोर्स लेना चाहता हूं। जबरदस्ती मैंने यहां पर क्या करा हुआ है, मैंने कोर्सेज का जो पहला कॉलम है विच इज माय कोर्स आईडी, उसमें मैंने जबरदस्ती डुप्लीकेट दिया हुआ है, जबकि मैंने ऊपर बोला है कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। सो इफ आई रन दिस कोड, ये कोड रन करूंगा तो क्या होने वाला है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ओवर हियर, टेल मी, इफ आई रन दिस कोड व्हाट विल हैपन, या व्हाट विल हैपन, बताइए, इफ आई रन दिस कोड व्हाट विल हैपन। Okay, not a lot of people are there. It's okay in chat box. ठीक है, I'll come back. Now once I run this code, it'll give me an error saying that duplicate entry हो रही है भाई. There is a duplicate entry over here. Please remove that. I'll not be able to take the duplicate entry because आपने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, unique constraint दिया हुआ है. राइट, लेकिन अगर मैं इसको कोई दूसरा नाम देकर रन करूंगा तो ये बहुत ही खुशी खुशी ले लेगा उसको। राइट, सो आई विल गो फॉर डेटा एनालिटिक्स ओवर हियर। मैं यहाँ डेटा एनालिटिक्स ही डालता हूँ क्योंकि एक चीज मुझे और बात करनी है, और डेटा एनालिटिक्स की जगह डेटा साइंस ही डालते हैं, डेटा साइंस ही डाल दिया। राइट, नाउ इफ आई रन दिस कोड विल रन। अब ये कोड क्या है, रन हो जाएगा। वंस आई रन दिस कोड आई कैन नाउ कॉल फॉर, मैं यहीं से कॉल कर लेता हूं ना, बार बार एक ही कोड क्यों लिखे। so, अब मैं टेबल को, इफ आई कॉल फॉर द टेबल ओवर हियर, द टेबल विल लुक लाइक दिस। सो GOD 102 डेटा साइंस सूरज 100 एंड हाइब्रिड। एक चीज आप ऑब्जर्व करिए दैट इफ I see this, I can see that duplications are fine with another column. For example, students intake में 100 और 100 duplicate entry यहाँ पर हो रही है। Similarly, course name, faculty और mode of delivery में भी duplicate entries are absolutely possible because unique constraint मैंने कहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ course ID पे दिया हुआ है। तो only course ID column will not be taking any duplicate entries. Rest of the columns at this point of time can take duplicate entries अगर मैंने वहां पर unique नहीं डाला तो। That is the meaning of unique over here. Okay, that is the meaning of unique. Now let me move on to the next constraint. The next constraint that we did over here was not null. So I'll just move on to that. It's over here. इसको हटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट वन इज नॉट नल। अब नॉट नल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट नल ओवर हियर। Not null. Not null is I cannot leave that column blank. That is, null values are disallowed. That is, I'll not be able to input the null values over there. null values नहीं डाल सकता भाई मैं यहाँ पर, मतलब खाली नहीं छोड़ सकता उसको। अगर आपने कोशिश करी खाली छोड़ने की तो भी कोड आपका रन नहीं करेगा, कोड आपका SQL आपको एरर दे देगा। और SQL basically is communicating that you yourself have given the constraint on not null over there. Now you're not giving me the values. How can I do that?
So SQL will very clearly argue, very logically argue with you that यार ये मत करो, right? So it'll say that if you have given not null, for example, course name मेरे को चाहिए ही चाहिए, course name के बिना मैं course कैसे launch करूंगा? So मैं बोलता हूँ यहाँ पर जब ये डेटा कोई बनाएगा तो यहाँ पर मैं not null का मैंने constraint दे दिया है, मैंने एक constraint दे दिया not null. But problem ये है कि मैं table फिर से run नहीं कर सकता guys, right? I cannot run this table again. Reason is I have already created this table. So मैं एक बार फिर से ये table को delete करता हूँ, right? I'll keep on doing it in the entire class because I want to multiple ways. I'm showing you multiple ways of creating the same table. That is why I need to, keep on deleting the table and remaking it. Okay. Now यहाँ पर हमने क्या करा है, पहले कॉलम में यूनिक कंस्ट्रेंट तो दिया ही दिया है, उसके अलावा नाउ वी हैव गिवन नॉट नल कंस्ट्रेंट इन दी सेकंड कॉलम. ओके, सो आई विल रन दिस नाउ. टेबल गॉट क्रिएटेड, बढ़िया. ये दोनों चीजें मैं टेबल में एंटर कर देता हूं. मैं ये वाला कोड रन कर देता हूं. चलो भाई तुम भी आ जाओ एंड तुम भी आ जाओ. नाउ इफ आई जस्ट लुक इनटू माय टेबल, द टेबल इज एज इट इज. नाउ ये टेबल, और थोड़ी देर पहले हमने इसी टेबल को देखा था, उसमें फर्क ये है कि नाउ द सेकंड कॉलम कैन नॉट बी एम्प्टी. Now, if I try and input a value, for example, if I try and run a code like this, let me try and run a code like this. Insert, insert into, all right, insert into courses, and insert into courses. I'll go for values. Values. And the values are, अब इसके लिए हमने क्या करा था, देखिए values में हम यहाँ parenthesis देकर कर रहे थे, isn't it? Values में I'll just go for this and I'll start going for values now. अब यहाँ पर what is my objective? Well, my objective is to show you that once I've given not null constraint in the second column, I cannot keep that column empty. मैं वो column empty नहीं छोड़ पाऊंगा, right? So that's the point over here. Now, okay. राइट, सो यहां पर मैं क्या करता हूं, कोर्सेज के कुछ सेलेक्टेड कॉलम्स में एंट्री करता हूं जानबूझ के. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट कॉलम टॉकिंग अबाउट इज कोर्स आईडी. लेट मी कॉपी दिस ना, ऊपर तो होगा ना कहीं पर, आई थिंक कर रही होगा. यस, ओवर हियर. सो आई विल गो फॉर कोर्स आईडी, स्टूडेंट इनटेक. पहले 3 कॉलम है ना हमारे, दीज आर द फर्स्ट 3 कॉलम्स ओवर हियर. सो आई विल गो फॉर control V. These are the 3 columns over here. I'll just come, don't worry. And what are the other columns? The other columns are student, faculty भी था और एक mode of delivery था. Mode of delivery में underscore है, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. I'll just write it up over here. So I'm going for course name followed by faculty. अब इसमें से मैं एक कॉलम हटाऊंगा, don't worry about that. I'll go for removing one of the columns. Faculty, then we have students intake, and then finally we have the 5th column as mode of delivery. Okay, right, so mode of delivery over here. Now यहां से मैं क्या करता हूं, कोर्स नेम हटा देता हूं. That is, knowingly I'm not inputting the name of the course. Okay, so I'll go for the rest of the case. For example, I'll go for GOD 103, and ये मेरा इसका, this is the course ID. कोर्स नेम मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं सीधा फैकल्टी का नाम दे देता हूं. यहां पर मैं बोलता हूं शालिनी is going to take this course. Then we have something called as students intake. Students intake is integral. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट नहीं देना, कोट नहीं देना, सॉरी. And the 4th one is mode of delivery. Mode of delivery is, let's say यहाँ पर hybrid कर देते हैं, इसको hybrid बोल देते हैं. Okay, this is my hybrid. Now यहाँ पर knowingly, जानबूझ के मैंने कोर्स नेम का जो कॉलम है वहां पर एंट्री नहीं दी है, saying that कि इसको ब्लैंक छोड़ दो. But I know that once I run this code, it's going to give me an error because ऊपर जब मैं टेबल को रीडिफाइन कर रहा था तो मैंने यहाँ पर कोर्स नेम की जगह पर कंस्ट्रेंट क्या दे दिया, नॉट नल. मतलब मैंने खुद बोला है सीक्वल को कि यहाँ पर नल वैल्यूज डिसअलाउ कर दो. मतलब कुछ भी करो पर यहाँ कोर्स का नाम तो डालना ही पड़ेगा आपको, राइट? Now if I run this, it's going to give me an error saying that course name doesn't have a default value. मतलब course name की आपने मेरे को, you haven't given me anything about the course name, right? Now if I go for course name, course underscore name, right? और मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ठीक है भाई कोर्स नेम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. So go for the course name as well. I'll say that, okay, I'll come down and I'll give a course name over here as well. And let's say the course name is data
visualization. I'll go for data visualization as my course name over here, isn't it? So data visualization, right? Now, and I'll say that this will be taken by let's say Sharad, okay, and 120 in hybrid. Now if I run this, इनफैक्ट एक और चीज, इसको रन करूंगा तो ये डेफिनेटली रन होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पर कोर्स का नाम दे दिया है. नाउ इवन इफ आई रिमूव द नेम ऑफ फैकल्टी, विल दिस कोड रन? विल SQL बी फाइंड दैट कि आपने फैकल्टी का नाम नहीं दिया है? Of course the code will run. Yes, the code ran over here because not null का जो constraint था, अगर आप ये समझ चुके हैं तो बहुत बढ़िया. Not null का जो constraint था, not null का constraint मैंने किस पे दिया है? सिर्फ कोर्स नेम पर दिया हुआ है. फैकल्टी empty हो सकता है. Now ये empty row कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर. This is how the empty row will look like. Select star from courses. This is how the empty row will look like. ओके, उप्स, क्या हो गया भाई? अच्छा, यहां पर मैंने इसको क्लोज नहीं करा है, सॉरी. राइट राइट, सो नाउ विल लुक एट इट. फैकल्टी नाम नहीं दिया तो फैकल्टी में उसने क्या डाल दिया? नल डाल दिया. ये नल यहां पॉसिबल नहीं है, कोर्स नेम में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पर मैंने क्या दे दिया है? नॉट नल कंस्ट्रेंट दे दिया है. राइट, दैट इज कॉल्ड एज नॉट नल कंस्ट्रेंट. अब मैं अगले कंस्ट्रेंट में आता हूं. सो यूनिक देख लिया, नॉट नल देख लिया, है ना? प्राइमरी की जब भी आता है ना, किसी भी अगर मैंने किसी भी इसको प्राइमरी की दे दिया, दैट इज इफ आई मेक अ कॉलम प्राइमरी की, ऑटोमेटिकली वहां पर यूनिक और नॉट नल लग जाएगा. ऑटोमेटिकली यूनिक और not null will automatically be applied over here. So if I give a column primary key, if I make course id primary key, जो मैं करने वाला था थोड़ी देर पहले, अगर वो कर देता तो यूनिक और not null दोनों जो है ना ऑटोमेटिकली वहां पर अप्लाई हो जाते विदाउट एक्चुअली गिविंग द कंस्ट्रेंट ओवर हियर. दैट इज द केस हियर, राइट? एनीवेज, विल कम बैक टू प्राइमरी की. राइट नाउ लेट मी गो फॉर check. What is check? At times it so happens that I do not want a certain kind of entry in my column. मतलब मेरे को अपने कॉलम में एक टाइप की एंट्री नहीं चाहिए. किस टाइप की एंट्री नहीं चाहिए मुझे? लेट्स से स्टूडेंट्स इनटेक नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो किसी ने अगर गलती से माइनस दब गया उससे और गलती कर रहा है अगर वो एंटर करते वक्त, तो उसको एक एरर मैसेज आ जाए कि भाई कुछ गलती हो गई, चेक कर लो. So point is, check is nothing but it's giving me a condition. भाई ये चीज फॉलो होनी चाहिए. एंड आई थिंक स्टूडेंट इनटेक इज अ गुड चेक ओवर देयर. स्टूडेंट इनटेक में मैं काम कर सकता हूं, राइट? स्टूडेंट्स इनटेक का मतलब है कि भाई यहां पर स्टूडेंट इनटेक है. पहली बात तो स्टूडेंट इनटेक मेरा क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ये क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर. एट द सेम टाइम इट हैज टू बी इंटीजर. दैट इज टेकन केयर ऑफ वंस आई हैव गिवन द डेटा टाइप ओवर हियर. पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज अलाउ नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पर. और मान लीजिए मैं एक ऐसा भी कर रहा हूं, एनीथिंग less than 100 I'll not open up a batch. I'll say that it's an online batch, so anything less than 100 I'll not open up the batch. So I'll have to say that if you are making an entry like in which students intake is let's say less than 100, 100 बच्चों को मैं, 100 के ऊपर बच्चों को मैं संभाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? 100 से नीचे इट्स नॉट गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ स्टफ. इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी. सो स्टूडेंट्स इनटेक 100 बच्चों के जब तक नहीं रहेंगे, 100 बच्चे एनरोल करेंगे तो 70 आएंगे, 70 आएंगे तो 50 पढ़ेंगे. सो पॉइंट इज, जब 50 पढ़ेंगे तो मजा आएगा क्लास में. सो दैट्स द पॉइंट. स्टूडेंट इनटेक 100 से नीचे नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट स्टेट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100. ये कंडीशन मुझे चेक करवानी है, राइट? ये कंडीशन मुझे क्या करनी है? चेक करवानी है. सो वंस आई अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू चेक ऑन दिस कंडीशन, राइट, I can now go to students intake and say that I'm giving okay, I'll just refresh this. और courses को मैं क्या करता हूं, फिर से delete कर देता हूं. I'll drop this table, drop now, and the table doesn't exist. And ये तीसरा constraint देकर मैं यहां पर चीजें चालू करता हूं, right? So I'll say that students intake is, I want to go for a check condition. Here is the check condition. और parenthesis में यहां पर मैं बोलता हूं students underscore intake has to be greater than or equal to
100, ये मैंने कंडीशन डाली है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 या 100 से ऊपर हो तो मतलब है, राइट. सो इफ आई रन दिस, द टेबल गॉट क्रिएटेड. अब टेबल में तीन तीन कंस्ट्रेंट्स है, पहले कॉलम में यूनिक, सेकंड कॉलम में नॉट नल, थर्ड कॉलम में अभी कुछ नहीं डाला है, बट फोर्थ कॉलम में चेक कंस्ट्रेंट इज देयर दैट स्टूडेंट्स इनटेक इफ आई एम टेकिंग दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 100 और एटलीस्ट 100 के नीचे नहीं जाएगा, राइट. सो लेट मी ट्राई एंड अगेन जबरदस्ती मैं एक ऐसी एंट्री करने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं उसको 100 से कम वैल्यू देने की कोशिश करूंगा. सो आई विल गो फॉर दिस थिंग. ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आई गो फॉर. अब मैंने सारे कॉलम्स ही डाल रहा हूं, सारे कॉलम्स अगर डाल रहा हूं तो मुझे कॉलम का नाम स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो आई गो फॉर दिस थिंग, आई से दैट 120 एंड आई थिंक फैकल्टी का नाम नहीं है यहाँ पर, राइट. सो आई थिंक आई गो फॉर द नेम ऑफ द फैकल्टी. लेट्स से इट इज Vishwas sir. Okay, Vishwas sir is going to take this. 120 is the name. Now 120 की जगह पर मैं 20 डालता हूं यहाँ पर. Let me try and run this. Okay. Now once I try and run this, you can see that there is a problem over here. Check condition is violated is what it is saying. It's saying that the check condition got violated. आपने check condition को क्या कर दिया है? Violate कर दिया है. मैं नहीं कर सकता. That I cannot enter this because you have told me that the fourth number over here, which is 20, should be greater than 100. You're entering something which is less than 100. So if I go for this thing, I'll go for, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, डेटा विजुअलाइजेशन 2.0 कर देता हूं. अभी भी रन नहीं करेगा, अभी भी कोड रन नहीं करेगा. oops, it got run. Oh, wait, 103 करा है ना मैंने, 2.0. this is interesting. Okay, so I'll go for select star. जरा टेबल देखे, फ्रॉम select star from courses, राइट. ओ सॉरी, टेबल, हाँ ये कोर्स तो रन कर गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, राइट. वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाले मैंने एंट्रीज करी नहीं थी, राइट. सो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री आफ्टर डिलीटिंग द टेबल, सो दैट वाज फाइन. सो इफ आई जस्ट रन दिस, ये भी रन कर जाएगा, 102 वाला कोड भी रन कर जाएगा. अब अगर मैं ये 103 रन करूंगा ना तो ये नहीं होगा, because 103 is already entered over here. If I run this code, this will not run. Reason, I've already given a unique constraint over here. और जब मैंने ये कोड रन करा था तो मैंने GOD 103 एक ये एंट्री जो थी मैंने यूज कर ली थी, एंड द सेम टेक्स्ट इज कमिंग ओवर हियर एंड SQL सेज दैट भैया इस कॉलम में आप दो एक ही नाम के डेटा एंट्री नहीं कर सकते. सो आई हैव टू चेंज एनी वन ऑफ देम. लेट मी चेंज दिस टू 04. I'll go for 120. If I run this, now the code will run because this is different. Now if I look at the table looks something like this. All right. Now fifth and the final constraint is my default constraint. Now what do you mean by default constraint? Default constraint says that कि अगर आपने गलती से null, if let's say you've missed entering the value over here, you can set up a default value. For example, I'll say that let's say मैंने गलती से faculty का नाम देना मैं भूल गया, or let's say forget about faculty, मैं mode of delivery, I forgot to give mode of delivery. I forgot to give mode of delivery. Mode of delivery देना मैं भूल गया, तो इसकी जगह अगर मैं ये डालना भूल गया mode of delivery, then in that case what you guys can do is, what SQL you can do is you can put up a default value of let's say Saurabh. ठीक है, अगर कोई फैकल्टी नहीं मिला तो मैं ही ले लूंगा इस बैच को, is what I'm trying to say basically. So if there is a default value मतलब if you're not provided the value, put this as the default value over there. राइट. सो आई थिंक ये नल वैल्यू को कवर अप करने के लिए काफी काम आ जाती है इस तरह की चीजें. ओके, नाउ व्हेन आई गो एंड आई विल रीरन द कोड अगेन, राइट. पहली बात तो मैं ये वाला जो कोड है ना, यहां पर फिर से ये मोड ऑफ डिलीवरी पर मैं क्या करता हूं, मैं कंस्ट्रेंट देता हूं डिफॉल्ट, और जब मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट दूंगा तो डिफॉल्ट स्पेस करके मैं यहां पर लिख देता हूं सौरभ, सॉरी नॉट सौरभ, मोड ऑफ डिलीवरी है ना, सॉरी मोड ऑफ डिलीवरी में मैं लिख देता हूं ऑनलाइन, सॉरी माय बैड, I'll say online. That is by default अगर किसी ने मोड ऑफ डिलीवरी अभी तक डिसाइड नहीं करी हुई है, we can say that we'll take it online. So by default we'll put it up online, right? That is the point over here.
So let me drop the table again so that finally मैं एक बार आखिरी बार ये table create करूंगा because all the constraints are there now. So I'll go for unique, I'll go for not null. Then यहाँ पर एक check condition में check constraint भी दे दिया है मैंने. I've given a default constraint over here as well. Default online. Okay. Now, once I run this code, I'll create the table again. And now, एक बार मैं table को देखता हूं तो table में आखिरी की जो वैल्यू ना मोड ऑफ डिलीवरी वहां पर क्या हो जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू ऑनलाइन है दैट इज if I forget to give mode of deliveries value over there, I can say that boss by default online डाल दो वहां पर. Let me run all the insert into course that the things that we have run over here 102. Let me run the 103 first, then I'll go for 104, then I'll go for is there a 105 नहीं वो मैं अभी करता हूं right. So let me go for 105 एंड इस बार जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूं मोड ऑफ डिलीवरी की वैल्यू क्या कर रहा हूं छोड़ रहा हूं. सो आई गो फॉर समथिंग लाइक दिस. आई से दैट कोर्सेज में सब कुछ एंटर करिए एक्सेप्ट एंटर एवरीथिंग एक्सेप्ट है ना कोर्स नेम हो गया वी कैन गो फॉर फैकल्टी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स इनटेक. ओके राइट सॉरी एक्सेप्ट दी मोड ऑफ डिलीवरी. आई एम सो सॉरी मोड ऑफ डिलीवरी के अलावा बाकी कुछ भी चीजें आप सारी की सारी चीजें मैं आपको लिख के दे रहा हूं. दैट इज कोर्स आईडी 103 है विच आई ऑब्वियसली चेंज नाउ 105. नाम भी थोड़ा बदलते हैं बार बार डेटा डेटा आ रहा है. सो आई गो फॉर मशीन लर्निंग दिस टाइम. मशीन लर्निंग राइट मशीन लर्निंग एंड लेट्स से इज टेकन बाय मी ओनली राइट. मैं ही ले लेता हूं इसको एंड स्टूडेंट इनटेक 120 बट मैंने फाइनली मोड ऑफ डिलीवरी की वैल्यू नहीं दी हुई है. I haven't given the mode of delivery value over there. Okay. Now, once I control enter this, I can now see that the code is still run. Code run करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. But जब मैं ये I'll just go for select star from courses. When I run this particular code, I can see that by मैंने mode of delivery नहीं दिया हुआ था यहाँ पर, isn't it? But default मैंने क्या बोला था उसका default में आप यहाँ क्या कर दीजिए ऑनलाइन कर दीजिए. default वाली मैंने even if I have not given mode of delivery value, I can say that यहाँ पर default अपने आप क्या आ गया ऑनलाइन आ गया. देखिए मैंने यही चारों चीजें दी थी 105 मशीन लर्निंग सौरभ और 120. लेकिन जब मैंने यहाँ पर बोला था कि भाई ये डेटा क्रिएट करते वक्त दैट in case I miss mode of delivery, go for a default value of online. उसने अपने आप यहाँ पर क्या डाल दिया default value डाल दिया that it has given a default value over there. Right? That's the point. That's the case here. Right? So yes, that's the basic concept of this thing, guys. This is the basic concept over here. Apologies for that. Okay. Just one, guys. Just one. I think there's a bit of hiccup. I'll need to look into it. Okay. Cool. Yeah. Great. Okay, I can see chat over here as well. Cool. Now, let me go for this. But check, is there anything in chat? You guys don't interact that much. That is okay. It's okay. I'll go back to my SQL dashboard over here. Okay. Cool. Now, अब ये चीज हमने क्या कर देख ली यहाँ पर सारे कंस्ट्रेंट्स हम लोगों ने देख लिए. अगर मैं यहाँ पर कहीं पर प्राइमरी की रख दूं फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट पुट अप प्राइमरी की ओवर हियर I'll say this is primary key and if I just may delete the table again and run it for the final time by saying that this is my primary key course id is my primary key then primary key का मतलब होता है इस particular कॉलम के बेसिस पे मैं पूरे रो को डिफाइन करूंगा. सो अगर मैंने इसको रन कर दिया द कोड गॉट रन एंड इफ आई जस्ट लुक इनटू कोर्सेज ना ये कोर्स आईडी जो है मेरा उप्स मैंने अभी कुछ डाला ही नहीं है. आई एम सो सॉरी. मैं फिर से इसमें एंट्रीज करनी पड़ेगी मुझे बिकॉज मैंने डिलीट कर दिया था ना. आई जस्ट एंटर ओवर हियर एंटर दिस देन एंटर दिस देन एंटर दिस एंड फाइनली एंटर दिस right and now I'll see courses over here. Now if I run this, these are my 5 courses over here. Right now guys,
If I go for a primary key, course ID is my primary key, which means that course ID पूरे के पूरे row की definition बनेगा. That is, this entire row will be defined by course ID. That is why course ID has to be unique and course ID cannot be left blank. That is why if I make any column primary key, वो automatically क्या हो जाता है, not null हो जाता है और unique automatically वहां पर the constraint goes over there. Okay, that's the meaning of primary key. Allow me to get back to foreign key later on. Okay, we'll move on to that once we start joining the tables. All right, so यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज कवर कर ली. अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा डीएमएल भी देख लिया है, हल्का सा हम लोगों ने डीडीएल भी देख लिया है. लेट मी टेक यू बैक टू डीडीएल, राइट? सो आई वांट टू गो फॉर हाउ कैन वी ऑल्टर कॉलम्स ओवर हियर. ओके, हाउ कैन वी ऑल्टर कॉलम्स. और कॉलम में मुझे क्या क्या ऑल्टर करना पड़ सकता है, क्या क्या ऑल्टर कॉलम्स तो नहीं बोलना चाहिए, आई शुड ऑल्टर टेबल. वो टेबल के अंदर मैं कॉलम ऑल्टर करूंगा ना, राइट? सो इफ आई गो फॉर दैट ऑल्टर टेबल में मैं क्या क्या चेंज करना चाह सकता हूं. जाहिर सी बात है किसी भी कॉलम में मैं ये तीन चीजें ही चेंज करना चाहूंगा. फॉर एग्जाम्पल, कोर्स आईडी दिया है आपने, मैं नाम बदलना चाह सकता हूं, या फिर मैं डेटा टाइप बदलना चाह सकता हूं, और आई माइट वांट टू चेंज द कंस्ट्रेंट दैट आई हैव गिवन ओवर देयर, isn't it? So for that it's very simple. Running the code for that is very simple. What you need to do is, यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ टेबल की कॉलम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम या फिर उसका डेटा टाइप या फिर उसका कंस्ट्रेंट, या तीनों या इनमें से कुछ दो. It can be any number over here, right? So I written the code over here. I think I'll just use this. I'll use this very simple code over here and then I'll explain this, right? So I think let's save some time in writing the code. Here the code goes for something like this, that alter table, right? Alter table means change the table. कौन सा टेबल? ये वाला टेबल भाई, कोर्सेज वाला टेबल. क्या ऑल्टर करना है? आई वांट टू ऐड अ कॉलम, राइट? As of now I do not want to add a column here. I want to change column. चेंज कॉलम का क्या मतलब रहता है भाई? चेंज कॉलम मींस इस पर्टिकुलर कॉलम को चेंज कर दीजिए. चेंज कॉलम, एंड नाउ आई हैव टू गो फॉर द नेम ऑफ द कॉलम ओवर हियर. Okay, what is the name of the column? Let's say mode of delivery only. Mode underscore of underscore delivery. इसी कॉलम को मैं क्या करना चाहता हूं? चेंज करना चाहता हूं. अब यहां से जो जो चेंज मुझे करने हैं वो मैं लिख दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ डिलीवरी, मैं यहां पर चाहता हूं इसका नाम. मोड ऑफ डिलीवरी इज व्हाट वाज मोड ऑफ डिलीवरी? मोड ऑफ डिलीवरी क्या था भाई? varchar था, राइट? सो मोड ऑफ डिलीवरी वाज varchar एंड varchar 10. इट वाज varchar 10, है ना? और मेरे ख्याल से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी था, विच इज ओके. नाउ आई वांट टू कॉल इट डिलीवरी मोड. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट मोड ऑफ डिलीवरी, आई विल से डिलीवरी मोड. एंड यहां पर मैं इसको क्या करता हूं? varchar 10 ही रखना है मुझे यहां पर इसको. Okay, I want to keep it as varchar 10 only, and that's it. I think, yeah, I can go for this. I think I can go for constraints भी दे ही देते हैं भाई यहाँ पर. Let me go for the constraints over here, and default online ही रखना है मुझे. This is what I want to do. Okay. The code is still giving me error. Perhaps I don't have to enter varchar over here. I think I can remove this. That way, I'd say that, see, understand what is happening over here. It says this is a language through which is speaking to SQL. Okay, SQL को आपने क्या बोला? Alter the table. Obviously, the next logical question will be which table. So you gave the name of the table, courses. Then what kind of alteration do you want? I said change the column, right? Which column? Mode of delivery. What kind of change? Change the name to delivery mode, keep it to varchar and default online. Now once I run this code, the code is run. And now एक बार अब आप टेबल को देखोगे, if you look at the table over here now, I'll go for select star from courses. And I'll be able to see that not delivery mode. ये mode of delivery नहीं हो रहा. अब ये क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है ये? This is delivery mode. The name of the column is changed over here, right? Right. So I think this is the case over here. For example, एक और करके देख लेते हैं इसको. For example, let's say I want to change the name of students intake to minimum students intake. So I'll go for alter table. Okay. Courses. See, पूरा logical चल रहा है. Everything is very logical over here. कुछ भी
illogical नहीं है. I gave a command alter table. Obviously SQL will ask that it's incomplete right now, इसलिए मैं red line दिखा रहा हूँ. The next thing is, what is the name of the table over here? I said courses, right? Alter table courses. And I'm saying what kind of alteration do you want? I said I want to change the column, right? Which column? I said students intake underscore intake. I want to change this column, students intake. यही था ना भाई, column का नाम यही था. I'll just say that कोई spelling error no, right? Students intake column का नाम यही था हमारे. Right now, once I given the name of the column which I want to alter, now I'll say that what kind of alteration do you want? I'll say that I'll change the name to minimum students intake. Okay, minimum students intake, and I'll keep rest everything is absolutely fine. I want to keep it as integer only. और इसमें मैंने एक और कंडीशन लगाई थी. आई थिंक दैट द कंडीशन वाज, this is the condition check wali. I'll copy this. Why to write this again? I'll just copy this and put it up. I said that baki sab वैसे का वैसा ही रहने दीजिए. So it says alter the table courses, change the column name students intake, and change the name to minimum students intake, keep it as integer, and put up a keep the check constraint as it is. पूरे कोड में कहीं पर भी रेड लाइन नहीं है, which means that the code is absolutely fine. Technically, code is not wrong. Code is absolutely fine. Once I run this, it is giving me, okay, what is the problem over here? Error code check constraint code uses column students intake, hence column cannot be dropped or renamed. Oops, I think I've given the constraint over there, so I cannot rename the column over here. ठीक है भाई, कोई बात नहीं. Then in that case, I'll go for one thing over here. So I've given a constraint over here, na. So we can drop constraint as well, but let's not get into that region right now. We can say that students intake वो बोल रहा है आपने यहाँ पर एक constraint दिया हुआ है, ये constraint जो है ना इसी के ऊपर काम कर रहा है, so you cannot drop that particular column over here. Okay, और एक चीज और मैं यहाँ देख लेता हूँ. चलो ठीक है, check को मैं यहाँ बोल देता हूँ, और probably I'll just try this. I'll go for minimum students intake के ऊपर constraint लगा दो. So if I run this still is giving me the same, case over here. So that didn't work. Fine. So in that case, I'll drop the idea that I'm altering this column, because check condition ke saath I cannot alter the column. So what I'll do is I'll add. Okay. Now what I'll do is in the alteration, what I'll do is I'm going to add a column. So if I go for add column, and I'll call minimum. What is the if I'm adding a column, obviously the next thing that I need to do is to add the name of the column. I'll go for minimum student intake. I'll go for minimum student intake. I'll say that this is my integer. Okay. And I'll say that, or probably I can go for, instead of going for minimum, I can go for maximum student intake, because student intake automatically becomes my minimum value. Okay. So I'll say that I'll put up a constraint over here. Check that maximum students intake has to be less than 150. 150 से ज्यादा बच्चे मुझे नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 150. At max 150, not more than 150. So minimum 100, at max 150. 150 के ऊपर will be too much of a clutter. I don't want these many students over here in my class, right? So I'll say that. Now once I run this code, okay, column check constraints references other column check constraint. अच्छा, check constraint नहीं बोल रहा है, check constraint डालने नहीं दे रहा है मेरे को. I also wanted to go for check constraints over here. This is not done. It says I'm referring it to other columns, where I'm just adding a column over here. एक काम करते हैं. I think I'll probably not be able to put the check constraint over here. Let me show you how to add a column. Let's keep that objective. Now once I run this, the column gets added over here. Okay, I can say that the column gets added. Okay, so alter table, this particular column got added. Now if I go for select star from courses, I'll be able to see this column.
maximum student intake, but maximum student intake is all everywhere null right now because well ऊपर मैंने इस कॉलम के ऊपर काम नहीं करा था, isn't it? Now I can give अब इसको मैं alter कर सकता हूं यहां पर, I can give a constraint over here, right? And we can proceed from there. That's the point. So guys, this is called as alteration. That is, I can alter the column, right? So I think जब हम लोग DDL commands पढ़ रहे थे, when we are looking at DDL commands, I'll just put it on the screen only, right? Probably I'll remove whatever is there on the screen. Once we were looking at DDL commands, data definition language, I think we were talking about create. Create is the first one. It can create databases, it can create tables, right? And second one is alter. Alter जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, alter. Alter means you can, change the column over here. I think it's pretty much established by now that when I talk about DDL, I'm talking about columns. So I can create columns or create tables over here. I can alter columns over here, and I can drop the tables. I can using that, I can drop the column. I can, you know, uh, delete this thing. I can drop the column. I can drop the table as well. For example, if I may use drop over here, I might drop the column over here. So example, alter table courses, and I'll say drop column. I'll say drop column. Then obviously I have to give which column. I'm saying maximum student intake. Let's drop this particular column. इस column को क्या करता हूं मैं drop कर देता हूं. Let me drop the column. Once I drop this column, the column is gone now. Now, if I run the code again, if I call for the entire data again, select star from courses, then in that case, I cannot see that column, which otherwise would have been there had I not used that code, alter table drop column. So I am able to drop the column. Using drop, I can drop the entire table as well. आपने देखा होगा when if I refresh it, once I'm deleting this table, right click, it's giving me drop table option over here. I can actually drop table as well. I can just go for drop table courses. If I run this code, the table which is called as courses will be dropped over here. ये table क्या हो जाएगा? Drop हो जाएगा. Right, but I'll not run this. I have already dropped this table enough in one class. So I think let's not do too much of injustice. But I think you can now look into it that this is the table that we have created. Okay. For the time being, let me minimize this. Right. So this is the table that we have created over here. It's a simple data, isn't it? Right. Now, I think please remember that people might think that sir ऐसे तो 10,000 data points क्या मैं एक एक करके enter करने वाला हूँ? Obviously not. Either you're going to take that particular data from a CSV or you're going to run a code like this. I think ye run. Right, this is a code. Now, what you can do is you can insert value into courses and एक row enter. This is a row over here, isn't it? Once you enter one row, you can put up a comma and give details about another row. And you can give details about as many rows as you want. जितने rows आपको एक साथ enter करने की इच्छा है उतना कर दीजिए आप. Nobody is going to stop you over here. Okay, so एक code पूरा का पूरा run हो जाएगा. So which means that by now we have looked at constraints, we have looked at alteration of column. I think it's time for us to move on to the next portion over here. But I think एक घंटे के ऊपर थोड़ा सा SQL, I think it's slightly challenging over here, right? So I think although I thought of going for 1.5 hour class, but I think it's better to go keep it as an hour class over here. एंड इफ यू थिंक अदरवाइज प्लीज लेट मी नो. मेरे को बताइए आप अगर आप बोलते हैं कि नहीं सर थोड़ा लंबा करिए क्लास को, 1.5-2 घंटा कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं. विल मेक इट 1.5 hour क्लास एज वेल, इजंट इट? क्लास को हम 1.5 घंटे का भी कर देंगे, राइट? Okay, so I think academically probably we can stop the class over here. Okay, probably we can stop the live session and I can stop share my screen here, right? I'll stop sharing my screen.
Guys, what I'll do is I'll keep these codes in one code share file, and I'll put it up in the comment box right now. So comment में दो चीज डाल देता हूँ. One is the link to the previous video, which I believe is somebody, one a few of our friends have joined this session over here for the first time. Probably they can look into it later on. And second one is whatever codes I've used over here, I probably will put it up in a code share file and share that the link of that particular file over there. Okay. So let me stop sharing the screen. There we go. Okay. Great. Now, please let me know if you have any doubts, guys. Feel free. Okay. If you have any doubts, please feel free to put your comments over here. If not, probably will be in a position to close this session. Let me go for the code share thing. I think once I generate the link of this thing, I'll go for code share. Right. And let me copy the code over here from SQL, whatever you have done till today. Till today. And I'll just put it up over here. Great, guys. Now I think I've got all the codes over here, and once I start sharing it, I can share the link over here. It'll be absolutely free. The only thing is, please ensure that you do not change the code, right? Because multiple people will be using it. Please use it only for copying the code. Okay, right. All right, guys, I think, yeah, this is it. This is where we can probably end the session, and we can say that this is sayonara. And tomorrow we meet at 11 sharp again to discuss further. Tomorrow we'll discuss on the next element, which is going to be querying. I think this is where I'm going to go for where clause. This is where I'm going to go for filtering the data. Today we have seen sorting and various kind of elements. I think we'll move on to the other elements later on. All right. All right, guys, thank you very much. Let me end the session over here. I'll put the link to the previous session and the share the codes over here on this thing, on the comment. All right. See you guys there tomorrow. Bye bye.